So I think we prepared a table, correct? Yes, 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 yes. Okay, fine. So from the table, we have to write down the new histogram equalization table. Okay, so what we have to do? Just let me check. Yeah, yeah. So we prepared this table. Fine. So first, as per the gray levels, there are the total 7 gray levels are given, 0 to 7. Total 8 gray levels are given. As per that, number of pixels are given. So from that, we have to find out the PRK, that is equal to NK by N. SK, that is equal to summation of first and second, then first, second and third, then first, second, third, fourth, like that. Then L minus 1 into SK, so you will get this value. Then you have to take the round off values. Okay, so round off value, it is indicate the new gray levels value. So as it is, I have written over here in the last column, that is the gray level of S is indicate the new image. Fine. After that, you have to write down this table in terms of in form of like that. Gray levels, you got the this 0 to 7. We know the gray levels. So as per the given input image, we have to write down the gray levels 0 to 7. Okay. Now number of the pixels in the last column, you are not getting the zero at in any row. Okay, so zero is absent, gray level zero is absent. That means for that particular gray level, the number of pixels are zero. For the one, here, when you get the one value in the new image, one for it is indicate the zero in the old image. Okay, so you have to write down the number of pixel in the new image as 1. You have to write down the pixels from the gray level 0 in input image R. So यहाँ पे 0 के लिए कितना है 790. So this 790, that is number of the pixel you have to write down for the gray level 1 in new image S. Okay, so for the 1 you have to write down the 790. So here you have to write down the 790. Now 3 in the new image gray level 3, that means 2 is absent. Again 2 is absent. Okay, so write down the 2 and write down the number of pixels as 0 because gray level 2 is absent. Then 3 when you got 3 when gray level R is 1. Okay, so what is the number of what are the number of pixel for the one in the old image, that is 1023. So this 1023 you have to write down for the number 3 in the new image. So for 3 you have to write down the 1023. Now again 4 is absent, so write down the 0 for that. 5, here 5 it is indicated 2 in the old image. So what are the pixels for the 2 in the old image? It is 850. You have to write down the 850 for the 5 in the new image. So write down the 850 here. Now 6, there are 2 times 6 written over here. Okay. So what we have to do? First 6 you got from the gray level 3 in old image. And next second 6 you got from the gray level 4 in the old image. So for the 3 and 4 in the given input in the given table, for the 3 and 4, how many pixels are there? 656 and 329. So you have to take the addition of this 3 and 4, and this addition you have to write down for the 6 in the new image S. So write down here, it is 985. Similar, you got the 777 for the 3 different gray levels in the old image, 5, 6, and 7. So take the addition of the 5, 6, 7 pixels value, 245, 122, and 81. And this addition you have to write down for the 7 in the final output image S. So this is 448. So this is your equalized histogram table. Okay. Now from this table you have to make the histogram graph. So for the 0, it is the value is 0. For the 1, it is 790. 2 is 0. 3 is 1023. 4 again 0. 5 850. 6 is 985, and 7 is 448. Just you have to represent in terms of in the graph form, gray level versus number of the pixels.
Okay, so you have to draw this histogram. It is called the equalized histogram. In some example, they may be asked you how to draw the original histogram. Original histogram, that means you have to draw the histogram of the given table of the old image. Okay, so uska bhi ek histogram plot kar do. This is for the original histogram and this is the equalized histogram. So you have to make the diagram of that. Understood how we can write मैम the, एक yes, डाउट था. yes. कैन यू एक्सप्लेन SK and L-1 SK? SK, that is equal to PRK. You have to write down from the PRK column. First value you have to write down as it is. Here the summation of PRK. Okay. So first as it is. Now for the second one you have to take the summation of this one. PRK first and PRK 2. 0.19 plus 0.25. This you have to write down here. Then for the third value you have to take the addition of the first, second and third. Now for the fourth one, first, second, third, fourth. Then for first, second, third, fourth, fifth, then up to six, then up to seven, and last one. So you will get the maximum value is one here. Now L minus one into SK. L minus one. What is the value of L minus one? It is seven. Okay, so you have to multiply SK with seven. So SK आपको यहाँ पे मिल गया है. Multiply with the seven each and every value. So you got this value. ओके मैम. Ma'am, Yes. here in the last box, gray level 01, the number of pixels in even column is zero, like for 2, 4, and 0. But then for 6, why is it 656 plus 3 to 9? It's not compulsory for the even you have to write down the zero. I have written zero here because these gray levels are absent in the new image. New image means what? This is my new image gray levels, last column. Okay, so here the gray level 0, gray level 2, gray level 4 are absent. वो ग्रे लेवल ही नहीं है, दैट मीन उसके नंबर ऑफ पिक्सल्स वो पर्टिकुलर लेवल के कोई पिक्सल्स ही नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 000. Okay, yes, Okay, ma'am. I have written 985 for 6 because here you are getting the 6 two times. 1 6 for the old gray level value is 3 and next one is the 4. For 3 and 4 in the above table you got a number of the pixels are 656 and 329. So you have to take the addition of these two and which one is indicated to new gray level number 6. Okay, so that's why you have to take the addition here. Yes, ma'am. Yeah. Understood. Any other doubt? नो मैम. Clear? So complete your example. मैम कैन यू ग्राफ? Yes. Wait. Graph is very simple. Represent the number of gray levels on the x-axis and write down the nk here. Nk, that is number of pixels of the particular gray levels. 0 पे कुछ नहीं है, 0 मिला, there nothing. 1 पे आपको 790 मिला, 2 is also 0, 4 is also 0. Otherwise जो भी वैल्यू मिला उसको इंडिकेट कर लो. That's it.
Done. Yes, ma'am. Okay, write down the next example for that. Okay, yeah. Write down this example. Written. Yes, ma'am. Okay. So in this example, uh, the table which one is shows the relation between the gray levels to number of pixel is not given. Here the only pixels values are given. Okay. So matrix form is given, digital image is given. In the previous example क्या था, वो particular table is given which one is shows the gray levels versus relationship of the gray level versus number of pixels. Okay, but यहाँ पे ये चीज नहीं दिया हुआ है. So first you have to make this table which shows the relation between that. So how we can make this table? First you have to decide the number of gray levels. Okay, so same concept you have to apply over here. Maximum value is 5, and for the 5 we need the 3 bits for the binary representation. So definitely the value of L is equal to 8. So number of the gray levels are 0 to 7. Okay, so write down this table first. Gray levels 0 to 7 in vertical form. Just wait. Gray levels 0, 1 up to 7. 5, 6 and 7. Okay, now number of the pixels, how we can write down the number of pixels? 0. How many times 0 is present in the table? 0 times. 0 times. So write down the number of pixels. 0 is 0. Okay, now 1, how many times 1 is there? आप लोगों ने लिखा ना, टेबल आपकी इनपुट इमेज है ना आपके पास? मैम 2 0. तक 0 है. Okay, 2 is also 0. Now what about 3? 6, ma'am. 6. Okay, 4, 14. 14, 5,
five, 5, 5, 6, zero, 0 and 7, Zero. 0. ओके, तो अगर आपको ऐसा डिजिटल इमेज दिया हुआ है, so first you have to make this table which shows the relationship between the gray levels to number of pixels. Now as it is process you have to follow. Okay, so make the another table, main table for the histogram. So write down the first gray levels, then nk, then nk divided by n, that is prk, then sk, then sk into l minus 1, round of value and new gray levels s. ओके, कंप्लीट करो चलो. Hello, ma'am. यस, यस बोलो. एम ऑडिबल? A40 और A56, आर यू देयर? आदित्य और त्रिपाठी अनुभव. Yes, यस. ma'am. A for present. हाँ, आप लोग yes, ma'am. अपना Present, ma'am. रोल नंबर चेंज करो. आपको नया रोल नंबर मिला होगा ना? मैम मेरा रोल नंबर 40 है. तो A40 मत लिखो फिर, इट्स अच्छा 40 ओनली. कंबाइन हो ओके गए ना अभी डिवीजन दोनों. ठीक है ठीक. ठीक है. Okay, ma'am. या सेम B02 नैनेश. ओके, मिल गए न्यू ग्रे लेवल्स ऑफ एस. बाकी स्टूडेंट्स. ओके, सो चेक योर आंसर. या ये मिला आपको, चेक करो. Okay, so then draw the histogram.
हो गया सबका कि बाकी किसी का कोई कर रहा है? Okay, fine. So now the next is the histogram specification. Okay, ये equalized histogram था. Now another part of the histogram, that is the histogram specification. So what is the use of the histogram specification? Sometimes as per your application and requirement, you need to highlight some features in image. So using the histogram specification, we can highlight some features of that. Okay. So in the histogram specification, there are the two histogram. As per the first histogram, we have to change. We can do the changes in the second images. Okay. So you can see here. Yeah. So directly example से ही करते हैं. Histogram A and histogram B. There are the two different histograms are given. Okay. Histogram is the nothing but the graphical representation of the image. So there are the two different images are given, and you want to some highlights the features in the histogram B. That means in image B. So how we can do for that? As per the image A, you have to change the you have to do the some changes in image B. That means using the histogram A, we can change, we can highlight some features in the image B. ओके, सो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है. तो सेम गिवन हिस्टोग्राम ए एंड बी, मॉडिफाई द हिस्टोग्राम ए एज गिवन बी. तो यहाँ पे क्या बोला है कि ए को चेंज करना है एज गिवन बी. Sometimes they may be asked, you have to modify the histogram B as given A. Okay, so यहाँ पे क्या बोला है, as per that you have to do. तो you have to So in this example, you have to modify the histogram A as given histogram B. These two different histograms are given. That is the relationship between the gray levels to number of the pixels are given. Okay. So for that, first you have to do, we have to use the same method for the histogram A. जैसे equalization में किया था हमने. So from this table, first make the original equalized table. Okay. So write down this example first. Question लिख लो. लिख लिया क्वेश्चन? हेलो, लिख लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन? ओके, सो Yes. make the histogram table for the histogram A.
same, write down the gray levels, then NK, then NK by N, that is PRK, then SK, then SK into L minus 1, and new gray levels of S. Did you get gray level of S? Number 34, Solving. बताओ. Okay, solving. Number 8, मैम पहले ए का निकालना था ना. हाँ, A का निकालना है. B का मत करना. B का पहले एक, अभी एक A तक ही करो आप. रोल नंबर 8. यस मैम. हाँ, बताओ, मिला आंसर आपको? नो मैम, अभी कर रहा हूँ. 12. यस मैम. आंसर बोलो चलो. मैम अभी नहीं मिला. 12 नंबर, एन का वैल्यू क्या मिला? ट्वेल्व. यस मैम. एन का वैल्यू क्या मिला? मैम अभी किया नहीं मैम. कुछ भी नहीं किया है मतलब आप बैठे हो, आप कर ही नहीं रहे हो. नहीं मैम, एक्चुअली मैं बाहर हूँ, मैं मॉम के हाँ साथ आया देखो, था कुछ. तो फिर ऑनलाइन क्यों हो?
नहीं मैम, मैं इसके बाद कर लूंगा मैम, लेक्चर के बाद। 8 नंबर, एन का वैल्यू बोल। रोल नंबर 8। ट्वेंटी नाइन। 38। ये सबका एब्सेंट लग रहा है, जो लोग मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। 44। 57। 56। Present, ma'am. एन का वैल्यू बताओ चलो। Yes, ma'am. Solving. एन का वैल्यू तो फर्स्ट स्टेप है, अभी तक तो मिल जाना चाहिए, क्या सॉल्विंग। कौन सी कॉलम में एन का वैल्यू मिलता है वो बता चल। नंबर 3। ओमकार। लेफ्ट हो गया। ओके फाइन, आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं है, नहीं करना है तो देख लो आंसर मैम डायरेक्टली। एन का वैल्यू 3385 है। किसने बताया? 34। ओके 34 ने। नहीं, एन का वैल्यू 4096 आ रहा है। मैम वो सेम 4096 प्रीवियस फर्स्ट सम की तरह आ रहा है सब यस, वैल्यूज. यस इट्स 4096। Only difference is there in the decimals. Otherwise, almost all values are same. यस, सो यू गॉट दिस टेबल। ओके, first histogram equalization table. This is for the histogram A. So as it is, you have to write down this table, जो पहले हम करते थे फर्स्ट एग्जाम प्रीवियस एग्जाम्पल में किया. Okay, now after that you have to equalize the histogram B as it is method. But after that ये जो टेबल बनाते हैं हिस्टोग्राम के बाद, ये मेन टेबल के बाद, वो हिस्टोग्राम बी के लिए थोड़ा अलग बनाना है. वो ए पे अभी डिपेंड करके होगा, वो अलग से बना लिखना है. तो अप टू दिस इज द इक्विलाइज हिस्टोग्राम ए प्रोसेस कंप्लीट हो गया. उसके बाद सेम हिस्टोग्राम बी को इक्विलाइज करो. So make the table for the histogram B, equalize histogram B.
ओके, सो यू गॉट दिस वन, या आपको ये टेबल मिल गया हुआ फॉर द हिस्टोग्राम बी। फाइन, अभी क्या करना है, नाउ यू हैव टू अप्लाई द इनवर्स ट्रांसफॉर्म। नॉर्मली हम लोग ऐसे ग्रे वाला ये जो स्मॉल टेबल है वो कैसे लिखते थे, यहाँ पे जो वैल्यूज है उसका अकॉर्डिंगली ओल्ड में ओल्ड आर, दैट इज द ओल्ड इमेज में जो भी वैल्यूज है उसके पिक्सल लिखते थे। अभी उल्टा करना है, हिस्टोग्राम बी में जो ओल्ड वैल्यूज है, दैट इज सपोज माय फर्स्ट वैल्यू 0 1 2, उसके लिए तो 0 0 0 मिला है। फाइन, तो 0 के लिए आपको 0 वैल्यू है, तो ये 0 वैल्यू किसका चेक करेंगे, अभी जो इक्विलाइज हिस्टोग्राम ए मिला है उसका वैल्यू चेक करेंगे। तो उसके लिए 0 के लिए 0 मिला हुआ है, सो सेम राइट डाउन 0 फॉर 0। फाइन, नाउ हियर 1 1 के लिए क्या मिला, 0 मिला। तो अभी ये 1 यहाँ पे उल्टा देखना है। Again I am going to repeat in the specification for the whatever the second histogram equalized का टेबल बनाया आपने, here you have to apply the inverse transform. So you have to check this old gray levels, that is 1 1 के लिए आपको न्यू ग्रे लेवल्स मिला है 0, और ये 0 लेवल आपको चेक करना है, ओरिजिनल का नहीं, आपको इक्विलाइज हिस्टोग्राम ए का टेबल चेक करना है। ओके, 1 के लिए क्या मिला, 0, तो यहाँ पे 0 के लिए क्या वैल्यूज है, 0 है, सो अगेन राइट डाउन द 0 हियर। सेम राइट डाउन फॉर द चेक सेकंड, सेकंड के लिए अगेन यू आर गेटिंग 0 एंड 0 के लिए पिक्सल्स 0 है इन द इक्विलाइज हिस्टोग्राम ए में, सो राइट डाउन एज इट इज 0। नाउ फॉर द 3 you will get the 1, you have to check the pixel number of the pixels of the gray level 1 in histogram A, equalize histogram A, that is 790. So this 790 value you have to write down for the gray level 3 in the histogram B. Okay, so 3 के लिए मैंने क्या मिला, 790। Same check for the 4, 4 is again 2, sorry 4 is 2, and here that for 2 again value is 0, so write down the 0 for the 4 in histogram B. For the 5 you are getting 5 here, so check the value of 5 here, it is 850, so write down 850 there. For the 6, same 6, so write down the 985 for the 6. For the 7, write down the 448. So you are getting here, you are getting these all values in the histogram B. These all values you have written from the equalized histogram A. So this is your final answer. Understood? Yes, ma'am, understood. Okay, fine. ये डायग्राम कंसिडर मत करना, ये किसी और का आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए नहीं बोला, अगर बोला है देन यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। कुछ तो किसी और का हिस्टोग्राम मैंने प्लॉट कर दिया है बाय मिस्टेकली, दिस इज रॉन्ग। या 7 का वैल्यू चेंज हो गया आई थिंक, यस इट इज 448 नॉट 1023। अगर प्लॉट कर रहे हो तो राइट डाउन दिस वैल्यू 448। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, इसमें कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग एंड हिस्टोग्राम दोनों कंबाइन करके पूछा हुआ है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो उसका कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग वाले पोर्शन में कर लिया है। ओके, हिस्टोग्राम अभी आपको पता है कि कैसे फाइंड करते हैं। सेम दिस डिजिटल इमेज इज गिवन, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द ग्रे लेवल्स। तो बताओ कितने आएगा ग्रे लेवल्स फॉर दिस क्वेश्चन। अभी सॉल्व में सिर्फ वर्बली आपको बता रही हूँ, आप बाद में आराम से सॉल्व करना।
We have done the contrast stretching portion of this example, okay, in the contrast stretching theory. Just histogram portion is remaining. So as per the question, you have to find out the contrast stretching as per the given characteristics. Then draw original and new histogram, okay. And third one is equalize the histogram. So the digital image is given. So first you have to find out the number of the gray levels and then make the table of gray level versus number of the pixels. Okay, as like similar previous example. So first tell me what is the value of the L minus 1. Yeah, L. It's 16. So number of the gray levels क्या आएगा 0 to 15. So from the for the 0 to 15, first for the 0, write down the number of pixels. How many times 0 is present in the table? 1. 1. 1. Yeah. So write down the 1. Then how many times ones are present? 0 time. So write 0. down 0 there. Then 2, 2 times. 3, 1 time. 4, 1 time. 5, 1 time. 6, 1 time. 7, 2 times. 7, 3 times. 8 is absent. So write down the 0. 9, 1 time. 10, 2 times. 11, 1 time. 12 is absent, 0. 13, 1. 14, 1. 15 is 0. ओके, तो मैम आपको तो ये तीनों का कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा? ये पूरा क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो एज इट इज 10 मार्क्स में पूछा हुआ है. ओके. कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग भी करना है इसमें और हिस्टोग्राम भी करना है और दोनों को प्लॉट करना है, हिस्टोग्राम न्यू, ओरिजिनल और न्यू. तो मैंने यहाँ पे कंबाइन करके जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में वैसे ही लिखा है. तो पहले कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कंप्लीट किया उसका, देन आफ्टर हिस्टोग्राम वाला पोर्शन. ओके, तो आपको ऐसा हिस्टोग्राम का टेबल बनेगा फॉर द 0 to 15. तो you will get the new gray levels. From that you have to write down this table. Okay, ये टेबल मिलने के बाद you have to make the histogram, equalized histogram, and also plot the original histogram. That means you have to plot the histogram of the original image जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके, फिर ये कंप्लीट कर लेना आप लोग. या तो यहाँ पे हिस्टोग्राम का टॉपिक खत्म होता है. 2 ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन एंड हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन. फाइन. हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग सिलेबस में नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया है सिलेबस में, तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ. चलेगा कि आपको सीखना है? मैम चलेगा. ओके, ओके फाइन. नाउ हिस्टोग्राम के बेस पे वो जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना क्वेश्चन 1 में, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इज हिस्टोग्राम इज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन. जस्टिफाइड करो अगर यस है तो, और नहीं है तो अभी उसको जस्टिफाइड करो कैसे नहीं है. नाउ यू गाइस टेल मी, यू लर्न द हिस्टोग्राम. ओके, हिस्टोग्राम इज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन और नॉट? Yes or no? Tell me. Histogram is unique representation or not? Okay, yes, fine. मैम इसका आंसर नहीं है ना? मुझे जस्टिफाइड करो ना. नो तो क्यों, कैसे?
क्या सोच मैम यूनिक अगर चेंज होगा एन का कोई भी और फैक्टर का ग्राफ भी चेंज हो तो दैट मीन कि यूनिक नहीं है कि है. है मैम। यस, फ्रीक्वेंसी वर्सेस ग्रे लेवल. तो यूनिक कैसे बनेगा फिर? ब्रोमेन. यस मैम। More than one image, you will get the same histogram. इमेज को रिप्रेजेंट करते हो डिजिटल इमेज में, तो सपोज ये मेरा इमेज है, ओके, जिसमें मेरा वैल्यूज मैंने इन बिटवीन 0 to 4 डिफरेंट वैल्यूज है. बेटा मैं एग्जांपल बता रही हूँ. सपोज मैंने कोई इमेज लिया जिसका वैल्यू है 1 2 0 1 0 2 2 2 3 3 3 3. ओके, एक इमेज ये है जिसमें 0 2 टाइम्स है, 1 2 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है और 3 4 टाइम्स है. फाइन. मैं दूसरा इमेज लेती हूँ जिसके वैल्यूज ऐसी कुछ है, 0 1 2 2 3 3 1 और 2. ये दोनों इमेज, suppose we are considering the digital image, तो these two are the different image, correct? पिक्सल्स का वैल्यू अलग अलग है ना. यहाँ पे जिसका वैल्यू 0 है वहीं पे उसका वैल्यू 2 है, तो कुछ ग्रे शेड्स होगा, यहाँ पे वो ब्लैक कलर होगा. तो लुक वाइज देखने जाएंगे तो ये दोनों इमेज अलग अलग है. बट व्हेन यू प्लॉट द हिस्टोग्राम, तो ये दोनों का हिस्टोग्राम सेम मिलेगा. बिकॉज हिस्टोग्राम मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ द ग्रे लेवल्स. नंबर ऑफ द ग्रे लेवल्स अगर उसका भी कंसीडर किया तो इट्स 0 to 7. सेम हियर 0 to 7 वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द पिक्सल्स. ओके, तो नंबर ऑफ द पिक्सल्स यहाँ पे कितने हैं? 0 0, यहाँ पे 2 है. 1 कितने हैं? 1 भी 2 है. 2 कितने हैं? 3 है. 3 कितने हैं? 4 है. रिमेनिंग आर 0 0 0. फाइन. सेम कंसेप्ट, सेम यहाँ पे भी वही सेम टेबल आपको मिलेगा, तो हिस्टोग्राम तो सेम आएगा. तो उसको यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं बोल सकते. हिस्टोग्राम इज नॉट अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन. यू विल गेट द सेम हिस्टोग्राम फॉर द नंबर ऑफ द इमेजेस. यस और नो? Yes. So we can say histogram is not a unique representation. वो काफी इमेजेस का हिस्टोग्राम सेम मिल सकता है. इमेजेस अलग अलग होगा, लुक्स इज डिफरेंट, बट यू विल गेट द सेम हिस्टोग्राम. ओके, तो उसका आंसर आपको जस्टिफाइड करके लिखना है. तो हिस्टोग्राम इट इज नॉट अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. आई विल शेयर दिस पीडीएफ विथ यू. कंप्लीट हो जाएगा पूरा तो मैं आपको आपसे शेयर करूँगा. क्लियर? एनी डाउट? ऐसे एक दो क्वेश्चन और भी है, डिफरेंसेस है. आई हैव रिटन दिस ऑल द स्मॉल क्वेश्चंस जो क्वेश्चन 1 में आ सकते हैं. ओके, फाइन. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है जिसमें 2 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया. फर्स्ट, बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ द इमेज, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डिजिटल इमेज एंड ऑल, व्हाट इज द पिक्सेल्स एंड ऑल. ओके, एंड द सेकंड क्या था? point processing, जिसमें we have done the some examples based on the point processing. Also we have completed the examples based on that: digital negative, contrast stretching, thresholding, bit plane slicing, gray level slicing, log transform and power log transform. And next था इसमें third one is the histogram specification and histogram equalization. तो अगर सिलेबस देखें हम लोग तो 3 का टॉपिक कंप्लीट हो गया एज पर योर सिलेबस. नाउ I will start the second unit, second module in the next lecture. So it is related. We can say it's a part of the image enhancement. Image enhancement in the spatial domain मैंने पहले ही बोल दिया था. हम लोगों ने स्प्लिट किया इस बार 2 मॉड्यूल में. तो image enhancement in the spatial domain, image enhancement in frequency domain.
In the spatial domain, there are the two different techniques: point processing and neighborhood processing. तो point processing था वो first unit में complete हुआ. Now we will start the neighborhood processing in the second module. Okay, second module को उन्होंने neighborhood processing से start किया है और पूरा spatial domain का filtering and all things are given in the second module. So we will study in the second module. But ये same image enhancement ही continue रहने वाला है. Okay. Syllabus 3.6 era. You can see here. तो point processing complete किया. तो first module में first 1.1 and 1.2 cover हो गया है. Now I will start the 2.1, the filtering portion of the image enhancement. Okay, in the next lecture. Clear? कुछ डाउट है फर्स्ट यूनिट में किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. Clear. Okay, fine. So I will upload the unit 1 PPT and unit 1 PDF notes in the Google Classroom after some time. Okay. Ma'am, you'll upload today, na? Yeah, I will upload it today. मैं थोड़ा करेक्शन कर लेती हूँ PDF में क्योंकि मेरा कंबाइन है फर्स्ट और थर्ड और एज पर द ओल्ड सिलेबस. सो प्रॉपर बना के उसको मैं शेयर करती हूँ आपसे. Okay, thank you. You can leave. Thank you, ma'am.